For 5 months every year, from March to when the monsoon season begins in July, 31-year-old Anshul spends her afternoons in the sprawling sherpine forests of Hamirpur, a small town nestled in the verdant hills of Himachal Pradesh. Member of a local women's organization called a Mahila Mandal, her hours here are spent gathering dried pine needles that carpet these woods. Together, this group of 12 women, donning sneakers, scarves and gloves for protection, end up collecting close to 2 tons of pine needles every day. हम लोग सुबह आते हैं यहाँ पे और यहाँ से जहाँ भी हमें चलारू दिखता है उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं, फिर उसे ट्रक तक लेके जाते हैं, फिर ट्रक में डालते हैं। उसके बाद ये फैक्ट्री में जाके इसकी प्रोसेसिंग होती है। ये जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, हरी पत्तियाँ नहीं उठाते हैं, सूख के इसकी पत्तियाँ अपने आप नीचे गिर जाती हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और इन्हीं सूखी पत्तियों में जो है वो आग लगती है। Sherpine trees, one of the dominant species in Himalayan subtropical forests, were first introduced by British colonists to support railway and ship construction. Today, they are bounties of resin, timber and wood used for fuel and carpentry. Over the past few years, however, this has become a fragile and dangerous relationship. Sherpine trees routinely shed highly flammable, needled leaves that cover the forest floors of Himachal Pradesh. These dried leaves are often the trigger for massive forest fires that are becoming increasingly common in the region, especially in districts like Shimla, Mandi, Kangra and Hamirpur. सर यहाँ पे हमीरपुर ब्लॉक में मोस्टली पाइन चील के जंगल हैं, तो चील के जंगल में आपको पता है कि पाइन नीडल्स बहुत गिरते हैं, तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम बहुत आग लगती है। Babita, a forest guard, and her colleagues are the first line of defense for locals like Sanjay. Farmers like him are at risk of injury, property damage and loss of life from forest fires sparked by a lethal combination of dry spells, high temperatures and flammable pine needles. जब आग जंगलों में लग जाती है, एक तो गौशाला का डर रहता है, जैसे हमारे जो जानवरों की गौशाला होती है, ठीक है, फिर उसमें घरों का भी खतरा रहता है। हम तो रात भर उसको देखते रहते हैं, सारे गांव वाले इकट्ठे होके, और हम उसको बुझाने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और उसमें जंगलाट वाले भी बहुत साथ देते हैं हमारे साथ, वो भी हमारे साथ रात भर साथ ही रहते हैं। In 2018, Himachal Pradesh witnessed around 2,500 fire incidents, the highest number in the past 8 years, that destroyed more than 25,000 hectares of forest land. Earlier this year, forest fires reportedly decimated over 8,000 hectares in a mere 2 months and resulted in damage worth 136 crore rupees to the state. जैसे भैंस, अगर मान लो जंगल में आग लग जाती है तो भैंस का चारा तो ख़त्म हो जाएगा, हैं, और उसमें भैंस का चारा ख़त्म हो गया, भैंस दूध कहाँ से देगी, उसमें हमारी आमदनी नहीं चलेगी, ठीक है, घर का खर्चा नहीं चलता है, हम दूध बेचते हैं, उससे गुजारा करते हैं। जैसे फिर बाहर से लाना खरीद के उसमें ज़्यादा खर्चा आता है, हम उतना गांव के आदमी हैं, हम गरीब आदमी होते हैं, हम ऐसा खरीद के नहीं ला सकते हैं। इसका ना इससे 2-3 साल का नुकसान हो जाता है, और इससे प्रदूषण भी बहुत होता है, जैसे आग लगने से धुआं ही धुआं फैल जाता है, इससे बहुत नुकसान होते हैं, जैसे चिड़ू पक्षी सारे मर जाते हैं, बच्चे बुच्चे सारे ख़त्म हो जाते हैं इसमें। In 2016, researchers at an IIT Mandi lab dedicated to uplifting Himalayan livelihoods set out to find a solution to Himachal Pradesh's forest fire problem. Within a year, the team led by Dr. Aditya was able to craft a method to harness the flammable properties of pine needles to not only reduce the likelihood of forest fires but also boost local economies. The idea was to manufacture eco-friendly fuel in the form of briquettes by chopping and compressing pine needles at high pressure and mixing them with other biomasses. Pine needle briquettes burn longer than wood but have a lower sulfur content and produce lesser carbon dioxide and methane than coal, making them an environmentally safe and efficient fuel. Calorific value of this dry pine needle itself is high, it's around 4,000 kilocalories.
but when you dry them, I mean remove the moisture and compress them, it is around 5500, which is pretty good. And then we also tried it mixing with all the other available biomass around the region. And we mixed it with the sawdust, that is a natural one, the wood chips and rice husk, bagasse, and all other things, whatever we could get. The team is now promoting this technology in Dr. Kashyap's hometown of Mandi to help local entrepreneurs build a sustainable business. She has also filed for a patent on the techniques to pre-process pine needles so as to get the best sizing and moisture optimization. We just thought of that, let's try different particle size. So we chopped them manually. Actually, we hired local villagers, labor, and we chopped them of various sizes, half, various sizes. Once we chopped them to a reasonable level and we put them in machine with 100% pine, we had a very nice, neat, beautiful briquette. And now we say that up to 4 mm to 6 mm size of these needles gives the best briquettes. Then we also optimize the moisture content, because moisture is another thing, and because moisture also controls the calorific value of the product. And now we know that up to 6% of moisture is fine. The quality of the briquettes is good, it doesn't degrade. Encouraged by the results, the state government in 2017 decided to offer a 50% subsidy to locals keen on setting up their own briquette manufacturing unit. Including machinery and other wares, a plant can cost around 7 lakh rupees to set up alone, a deterrent for low-income residents despite the subsidy. So if somebody wants to set up the plant, the process is very simple. You have to apply to the local DFO office. Form is very simple. You just have to give document for your land, and you have to make a project proposal sort of, which is not difficult, and we help in that. If it is granted, then DFOs know that this encashment area would be given to this villager, and they also provide help in collection. So far, the government has approved 25 briquette production plants. These pre-approved production units have the potential to create employment for close to 200 locals once the COVID-19 situation improves. इस प्रोग्राम के शुरू होने के बाद हमारे एक तो लोगों को जो नियर अबाउट हैं गांव में लोग, उनको रोज़गार मिला है, और उनके जैसे पशुओं के लिए चारा हुआ है। जैसे चारा वैसे जैसे जल जाता था, उनको चारा नहीं हो पाता था ना, पाइन नीडल्स गिरने की वजह से वो जल जाता था, और जैसे आग के चांसेस कम हो गए हैं। हमारी प्रॉपर्टी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो भी सुरक्षित रह रही है, और आने वाले टाइम में अगर इसको ज़्यादा हम रेगुलर करेंगे इस प्रोग्राम को, तो हमें आने वाले सालों में देखेंगे कि हम आग पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा काबू कर पाएंगे। Dr. Rajneesh Kanwar, chairman of an NGO that works for local education and the environment, has been running his own briquette manufacturing unit. The unit supplies the eco-friendly fuel to other chemical industries owned by his NGO. Our total capacity of the plant, that is a 10 metric ton daily. On the basis of 300 working days, we can produce 3000 metric ton of the briquettes. The biomass briquettes we are manufacturing has a great demand, especially in the tribal areas where there are no plants. And as such, in the past, more of the trees were cut to cater the need of the fuel in those areas. With the support of the state's forest department, Dr. Kanwar not only has a robust production plant, but also employs local women like Anshul to collect pine needles from the forest, a process crucial to tackling forest fires. पहले चलारू नीचे गिरता था तो बाकी पेड़ पौधे नहीं उग पाते थे उससे। अब ऐसा है कि हम लोग चलारू इकट्ठा कर देते हैं तो और पेड़ पौधे उगते हैं, जिससे हमारे पशुओं को चारा मिल जाता है। चलारू इकट्ठा करने से हम लोगों को एक रोज़गार मिल गया है, जिससे हम लोग आत्मनिर्भर बन गए हैं। महिलाओं को ऐसे दूर जाना पड़ता था काम करने के लिए, अब एक अच्छी बात है कि हम लोगों को अपने घर के पास में काम करने को मिल रहा है, और पूरा दिन भी यहाँ पे काम नहीं करना पड़ता है। कुछ टाइम आके अपना काम करते हैं और बाकी फिर अपना घर का काम समेटते हैं। Sanjay was one of the first locals here to make a living in the pine needle briquetting business. He now owns his own production unit and has been selling briquettes since 2017 to buyers across the hilly state like cement production companies and heating stove manufacturers.
During the lucrative month, Sanjay has reported sales of around 1 lakh rupees. मेरे परिवार को फ़ायदा होता है, जैसे सारे परिवार को मेरे को रोज़गार मिल गया है। और दूसरा ऐसा भी थोड़ी मती इसमें कमाई चली रहती है, जैसे हम जंगल से भी हम खुद लाते हैं, चला रहा इकट्ठा करते हैं, उसका हम क्रेट बनाते हैं और उसको बेचते हैं और उससे हम अपना गुजारा घर का चलाते हैं। I consider this project to be the most successful project out of all other R&D projects I have done because of the couple of reasons. Number one, that it has gone to society. It is not limited to now lab. It has actually reached to society. Some units are already running. Number two, it has yielded in a very good, very friendly policy by Forest Department. I would call it a huge success once I see 100 units running in Himachal, because then we won't, I think then that will solve the problem.